So thank you so much for joining us, Vikram. And I don't know if you can see, but there should be. We were hoping to have this be, a reunion in person, but that will have to happen another time. So, um, thank you so much for sharing your work, Dorana, with us, Shabir and Vikram. Um, I was wondering if maybe you could, because the people in the room, in the hall, may not be so familiar with your project. I was wondering if you could talk a little about how you two came to collaborate and say a little more about, how you were brought together by gardening and by plants and work with plants. वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने गार्डनिंग और अपने बागवानी की जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं। कुछ लोग ऑडियंस में जानते नहीं होंगे आपके काम के बारे में। हाँ विक्रम भाई, कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। He's saying he's well. So the question is, should I speak in English or Hindi? Either way. Okay, I'll speak in English. I'll just move between them. Okay. हम कैसे मिले थे? रिकॉर्ड में नहीं। ये पूछना कैसे मिले थे? So in 2014, Murtaza Wali, the curator between Sharjah and New York, he invited me to do some kind of intervention in Al-Majaz Park, or some kind of artwork in Al-Majaz Park, which is a public park in Sharjah. 2014 में मुर्तज़ा वाली ने अल-मजाज मार्ग में कुछ काम करने के लिए इन्हें बुलाया था। तो ये मुर्तज़ा वाली क्यूरेटर है, और शारजाह और न्यूयॉर्क के बीच में रहते हैं। तो और मैं काफ़ी साल से मैं दुबई में रह रहा था तभी, और मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि कुछ मुझे जो अर्बन ऑपरेशंस है उसमें मुझे कुछ इंटरवेंशन करना था। I had been living in Dubai for some time then, and I wanted to go further with my work. और जब मुर्तज़ा वाली ने इनवाइट किया, तभी मुझे समझ आया कि जो अल-मजाज पार्क है, वो अल-मजाज पार्क is basically part of this art center called Magaya Art Center, which is part of a larger semi-government entity called Shuruk. And that's when I realized that I perhaps would have a chance of working with, an urban system and urban operation. जब मुर्तज़ा ने मुझे इनवाइट किया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक लार्जर गल्फ सेंटर की एक स्कीम का हिस्सा है, और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इस काम को थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। And that's how I met Shabir, and then the invitation was to work in this park, and basically I was spending time in the park observing and getting to know the people working out there, and that's when I met Shabir and 5 other gardeners. There was Shabir, Shahid, Tariq, Mustafa, and Shahid. In fact, Shahid is the gardener that you see who is the model in the film. And basically, I remember Shabir and Shahid asked
शाहिद और बाकी गार्डनर्स ने मुझे वहाँ पर बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो फिर उनके साथ मिलकर मैं इस लैंडस्केपिंग के प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना चाहा। And I think what was very special about that project, and I'm going to set up the background for you for the background of the project over here, is that gardening project where there were 5 hedge designs that they deployed over a 100-meter long hedge was supposed to stay back for 3 to 4 months. That's a normal duration of, an art exhibition. And at the end of it, Shabir and another gardener named Sajid, who was a background, he actually lives in the Sindh province. They said we do not want to lose these designs. We want to keep them. And I said we don't have to maintain them anymore because the exhibition is over. And the designs that they deployed are quite complicated. So they said we want to keep these designs. And so I had to negotiate on their behalf with the municipal authorities that the maintenance of these hedge designs will become part of the regular maintenance of the park itself. And all of them maintain these pattern hedge designs for at least from 2015 until 2021. That was during COVID when they couldn't access the park, that those hedge designs some of disappeared. And this was something very special for me because in a sense, what I realized was that in some sense I was looking for this participation and collaboration, but there was this transfer, there was this claim of ownership of the work, and the development took it over and made it their own. 5 हेज डिज़ाइंस थे जिन्हें गार्डनर्स ने मुझसे कहा कि हम इन्हें खोना नहीं चाहते, मगर 2021 के अराउंड जो कोरोना का टाइम था उसके दौरान पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो डिज़ाइंस खो गए। मगर उस वाक़ये में मैंने देखा कि इन डिज़ाइंस के तरफ जो किसान थे वो बहुत चाहत का मुज़ाहरा करते थे और वो इन डिज़ाइंस की बहुत ओनरशिप लेते थे। शबीर आपको बताएंगे उसके बारे में जो आपने डिजाइन बनाया? हाँ विक्रम भाई। Shabir, could you tell us a bit more about your designs? हाँ वो जो डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया था तो इसलिए आपको हम लोगों ने कहा था कि ये डिज़ाइन अभी दोबारा जो ना काटना नहीं चाहिए, लेकिन वो 5-6 साल के बाद और फिर उन लोगों ने काट दिया। We gave the designs to you and we asked you to keep them for 5 or 6 years, but somehow the designs got cut off. तो जितनी देर वो डिज़ाइन रहा उसकी हम लोग अच्छे से देखभाल की उसके तो For however long we had the designs, we kept good care of them. In the process of knowing them at that point, in 2015, I realized that what I learned is a day that most of these gardeners come from a farming background in Pakistan. मुझे उस वक्त में अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादातर किसान पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल से रिलेटेड इलाके से आते थे। नहीं, जो बागवान है, वो जो बागवान शाहजहां में है, वो फार्मिंग का काम करते हैं और उनका एक तजुर्बा है फार्मिंग। The people taking care of the gardens in Sharjah were related to the agricultural field in Pakistan and they had a lot of experience in farming. And a lot of my life, as an artist, I spend a lot of time, with my collaborators. So it's not that I sort of just deploy ideas, but I'm trying to create, some kind of social space where we all, hang out, if you want to call it. If you want to translate that. एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं सिर्फ ये नहीं चाहता था कि अपने आइडियाज़ किसी पर मुसल्लत करूं, बल्कि मैं चाहता था कि हम मजमूई तौर पर इस पर काम करें और एक अच्छा सोशल एटमॉस्फेयर बना सकें। And I think that's when I realized that the way all of these colors have understanding of soil, water, weather, the changing cycle of seasons. To me, that was something so poetic. And we discussed what they go back to with their family farms. That's where the seeds for the idea
मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन किसानों का अपने आबो हवा और मौसम से जो ताल्लुक़ था वो तकरीबन शायराना था, और वो जब घर जाते थे तो वो इनके बारे में बात करते थे। तो सभी में अभी बात करूँ अपना जो राउंड प्रोजेक्ट था। जी So we actually had the idea for the roundabout project since 2015 that they go back to bring back schemes and we found them in a roundabout. And in 2017 for the Sharjah buying of the scheme for me was just become let's just initiate this process. And so that's when the roundabout project took off, where we got permission to fly to partners, which was actually Sameer and Sergeant. One came to Punjab province, one came to Sindh province, and they brought back seeds, from their family farms, and there were seeds for chilies, tomatoes, I think 7 to 8, or at least 15 odd different seeds they brought them back in their package in a small amount. Then that began this project and the project was called Beach, and we got a large amount in the middle of the city, which then was transformed into an urban garden. फिर जब हमें पाकिस्तान से किसानों से मिलने की और उनकी तरफ से बीज लाने की इजाज़त मिली, तो फिर सलीम और साजिद जो पंजाब और सिंध से ताल्लुक़ रखते थे वो अपने आबाई इलाकों से बीज लाए, और उन बीजों में टमाटर, मिर्चें, इस किस्म के बीज मौजूद थे, और वहाँ से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। So what happened was that we did not have sweet water connection in the roundabout in 2017. And so essentially, and there's a lovely image of Shabir where it was very clear understanding between us that we were going to grow these seeds so that we could, the produce could be consumed. It was very clear for the gardeners that we could not basically use the available treated sewage water which is used for landscaping in UAE. We wanted a sweet water connection. So for the 2017 biennial, we did not initiate the project completely. We said we cannot just grow something because we need to have an image of something. We said we actually want to grow something that can be consumed. 2017 में हम इस प्रोजेक्ट का आगाज़ इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास दरियाई पानी दस्तयाब नहीं था, और हम उस वक्त ट्रीटेड सूवेज का पानी इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम इस बारे में बहुत क्लियर थे कि हम ये बीज से जो क्रॉप उगेगी वो हम खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। So we अब मजारी पानी बोलते हैं उसको। क्या विक्रम भाई? मजारी पानी बोलते हैं। जी मजारी तो पानी का उसमें क्या रहता है? वो गंदा पानी होता है। The water is not clean. So basically what happened was from 2017 to 2019, we spent 2 years negotiating with the Supreme Court, the water body and the electric body, to allow us to plant a water tank and get a sweet water connection through the roundabout. So it took us 2 years to facilitate sweet water coming into the roundabout. हमने सिंध की गवर्नमेंट से इल्तिजा की कि हमें दरियाई पानी की दस्तयाबी दें, क्योंकि उस पानी से हम क्रॉप नहीं उगा सकते। And by the time I left UAE for 3 years to complete this masters, and when the roundabout project initiated in 2019, I was not in the country. So I did not experience it. It was actually Shabir and Sameer, of course, because they were like, they were like, handling the farming of the project. I never got to experience it. So we had this long exchanges over WhatsApp. And in that process, I realized that Shabir has this very beautiful penchant for poetry, for Urdu poetry. And so when I came back to UAE in 2020, was the end of 2020, we began collaborating to reflect on the roundabout projects through Urdu poetry. And that's where, in some sense, the Rana ideas emerged. So the roundabout. उसके बाद मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री पूरे करने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। इस वजह से मैं प्रोजेक्ट पर ख़ुद काम नहीं कर सका, मगर उस दौरान शब्बीर और सलीम ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना
शुरू किया और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शब्बीर के पास एक बहुत शायराना टैलेंट मौजूद था और वो हर बात को शायराना अंदाज में करने का आदी था। तो शबीर भाई आप थोड़ा जो राउंड अबाउट था उसके बारे में बताओ कि आपको पता है वो तो मेला लग गया। ये विक्रम भाई जो रोंडा बाउंड का हम दोनों ने ख्वाब देखा था, इस पे कुछ लगाने का सोचा था, तो उस वक्त उस रोंडा बाउंड के पास से सिर्फ लोग गुजरते थे, रुकते नहीं थे वहाँ। लेकिन We had dreamed a lot about the roundabout, but at that time it was not put into place. People would pass the roundabout, but they would only stop to stare. और जब उस रोंडा बाउंड में हम लोगों ने काम शुरू किया तो उधर लोग रुकना शुरू हो गए, देखते थे कि क्यों वो पहली दफ़ा उधर हो रहा था ना, उससे पहले तो कभी नहीं हुआ उधर। तो एक दिन वो रोंडा बाउंड फिर ऐसा बन गया कि लोग वहाँ रुकते भी थे और उधर मूवी भी बनाते थे। पूरा लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई अजीब काम हो जाता है पहली दफ़ा। Eventually, when we began working on the roundabout, people would stop to stare and they would make videos because they'd never seen anything like this before. वो जो राउंड अबाउट है जिसको जो आपने मैंने सब लिखा है मैंने क्या क्या आपने उधर कौन सा आपने उधर पैदा पौधा उगाया था। What kind of plants did you plant over there? मैं बताऊँ आप दिखा रहे हैं? Should I show you or are you showing us? ये उधर एक तो मूली था, वो रोंडा बाउंड के अंदर मूली था, उसके बाद ये टमाटर था, मिर्ची थी, पुदीना था, धनिया था, ये जो मक्की है खाने वाली वो थी, आलू थे, और उसके बाद वो जो सब्ज़ी होती तोरियां होती हैं वो भी थी। तकरीबन हर चीज़ उधर लगाई थी जितनी ये खाने वाली चीज़ें हैं। There was mint, turnips, tomatoes, corn, all of those things that are consumed regularly. There was almost nothing that wasn't there. वो किसने खाया, वो किधर गया वो सब, वो मुझे कुछ बताओ, वो बहुत खाने पे Who ate those things? क्या विक्रम भाई? ये जो आप जो था टमाटर सलजम सब किसको आपने बांटा, किधर गया? वो जो उधर लोग रहते थे उन सबको फिर बांट दिया ना। लोग रोज़ आते थे, बार बार आते थे, हमको ये चीज़ चाहिए, ये फ्रेश है, अच्छी है, खाने वाली है, ताज़ा है। तो फिर जितनी उधर फैमिलियाँ रहती थी वो सब आती थी हर रोज़ हमारे पास लेने के लिए। The families would come by and request for the fresh vegetables, so we distributed all of it to them. I mean, you're like, I love this project, and I always struggle with the name of the artworks. Because you have to name an artwork when you make a proposal and all that. But सभी भाई आपने बताया था कि जो उधर जो लोग थे वो एक वक्त हुआ था कि सबको पता चल गया था कि यहाँ पे रोड पे कुछ हो रहा है। जी तो इसीलिए बोला था कि ये तो सब्जी लगाना बहुत है। जी Do you remember people started calling it the vegetable roundabout? इधर हमारा हाँ जी। But so this is, I think, John, to answer your question in a long way, this is how we came to pages for Okay. इसी तरह हम दोहराना को मुकम्मल करने की तरफ पहुंचे। क्या क्या विक्रम भाई? मैं बोला कि ये सब ना पहले कहानी है कि वो डिजाइन किया बाजार में ये रोबोट किया जी ये सब करके हम एक मौजे पे पहुंचे कि अभी हम पहुंच गए ऐसे मौजे पे कि अभी हम को शायरी क्यों बनाए। ये विक्रम भाई हमको पहली दफ़ा मजाज पार्क में मिले थे, हम लोग काम कर रहे थे। तो विक्रम भाई ने हमसे पूछा कि मैं यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ, ये जो दीवार है इसको ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो क्या बन सकता है? तो मैंने विक्रम भाई से कहा था कि हाँ बन सकता है, अगर आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं तो बन सकता है। तो
We met Vikram Bhai in Majaz and he asked us that he wanted to do something agricultural here and whether it was possible for us to do that. We told him yes, it was possible if you sought permission from the Sindh government. तो उसके बाद विक्रम भाई ने उधर जब गवर्नमेंट से परमिशन ली तो फिर हम लोगों को बताया कि मैंने उनसे ये परमिशन ले ली है, तो आप अभी इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने की तैयारी करें। तो हम लोग पहले उसे काटते थे, फिर हम लोगों ने उसको काटना बंद कर दिया ताकि ये बढ़ जाएगा तो फिर इसका डिज़ाइन बनेगा। तो तकरीबन 3-4 महीने के बाद फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू किया। विक्रम भाई हमारे पास रोज़ आते थे, हम लोगों ने मिल के काम किया और वो डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम लोगों ने फिर विक्रम भाई से बोला कि आप गवर्नमेंट से बात करें कि ये डिज़ाइन जो है ना इधर ही रहना चाहिए, ये काटना नहीं है। तो विक्रम भाई ने फिर बात की, लेकिन वो 5-6 साल के बाद जब कोरोना आया तो उस वक्त उन लोगों ने फिर काट दिया, पता नहीं कैसे काट दिया, क्या कर दिया। Vikram Bhai managed to get permission for the boardroom and he told us that he had succeeded in securing the permission and told us to begin work. So we started working on them and we let them grow so that we could cut them to make them into hedges. And eventually they became so beautiful, but somehow they had to be cut off in the end and it was very disappointing for us. तो जब ये हमारा प्रोजेक्ट जो मुकम्मल हो गया उसके बाद कुछ अरसे के बाद विक्रम भाई मुझे फिर मिले और मुझसे इसने कहा कि यहाँ मैं सब्ज़ी लगाना चाहता हूँ, क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? तो मैंने विक्रम भाई से कहा कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं, हमारा यही काम है। तो विक्रम भाई ने कहा कि कैसी जगह होनी चाहिए। मैंने फिर इसको बताया कि इस तरह की जो ज़मीन है, जो जगह होनी चाहिए। तो वो विक्रम भाई ने वो जगह ढूंढी और गवर्नमेंट से फिर बात की। तो फिर विक्रम भाई को मैंने बताया कि बीज जो है ना हम अपने मुल्क से लेके आएंगे। तो फिर विक्रम भाई ने 2 आदमी को उधर से गवर्नमेंट से इजाज़त लेके दी, वो पाकिस्तान में आए, वो बीज लेके गए। हम लोग काम शुरू करने वाले थे कि जब वो पानी जो था ना, जो हम लोगों ने वो सब्ज़ी को, वो खाने वाली चीज़ों को लगाना था, वो पानी इस काबिल नहीं था। तो उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट हमारा तकरीबन 2-4 साल के लिए रुक गया। उसके बाद फिर विक्रम भाई ने वो जो मीठा पानी है ना, जो पीने वाला पानी है, उसका इंतज़ाम किया ज़मीन के नीचे से। और उसके बाद हम लोगों ने वो जो रोंडा बॉन्ड का प्रोजेक्ट है ना दोबारा शुरू किया। Vikram Bhai told us that he wanted to plant vegetables and asked us how to do that with the land. So we told him, and we told him that we wanted to bring the seeds from our country. So we went back to Pakistan and 2 of us got seeds from Pakistan and we planted them in the roundabout. But then we realized that the water there was not suitable for growing the crops. So after that we had to arrange fresh water from the wells. And when we managed to do that, it took us 3 or 4 years to secure the fresh water, and during that we couldn't do any work. तो विक्रम भाई तो उस वक्त उधर नहीं थे, ये तो अमेरिका में थे। तो हम लोगों ने, मैं और एक मेरे साथ मेरा दोस्त था, सलीम था उसका नाम, हम दोनों ने वो काम शुरू किया। तो जब हम लोग वहाँ काम करते थे, क्योंकि वो फैमिली एरिया था, उधर सब फैमिली रहती थी, तो हम लोग काम करते थे तो लोग हमको देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने वहाँ काम किया और सब्ज़ी जब उधर उगाई, तो उधर लोग फिर इतने शौक़ से आते थे कि उधर कोई मूवी बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जब वो सब्ज़ी बिल्कुल तैयार होगी तो फिर हम लोगों ने विक्रम भाई से पूछा कि अब इसका क्या करना है। तो विक्रम भाई ने हमको बोला कि ये जितनी इधर फैमिलियाँ रहती इन सबको बांट दो। तो फिर हम लोगों ने वो जो जितनी खाने पीने की चीज़ें थी वो हर रोज़ लोग आते थे, जो किसी को पसंद था वो लेके जाता था। Vikram Bhai was in America for his studies at that time, so me and Salim went to work on the project ourselves. We began planting vegetables, but it was a residential area, so the families used to crowd around the roundabout and look us in a strange way as if to ask us, "What are you doing?" But eventually they began to enjoy it and they began to record videos and enjoy watching the roundabout. And when the vegetables grew and they were fresh, they asked us for the vegetables and we asked Vikram Bhai what should we do with them. And Vikram Bhai told us to distribute them to all of the families that had come to watch the roundabout. हम लोग, विक्रम भाई भी परदेसी थे, हम भी परदेसी थे, तो विक्रम भाई का ये ख्वाब था कि इधर ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने विक्रम भाई का साथ मिलकर ये काम किया और उसका जो ख्वाब था उसको पूरा किया है।
Vikram Bhai was foreign to the area, and we were foreign to the area, but we had a dream, so we went to work to make it come to fruition. ओके Okay. क्या Oh, so I was just saying maybe we can have just one last question for you, which is how you went from that project, the Roundabout project, to the film, and so you were saying that part of this is Shabir developing his talents as a poet, or you're discovering those talents, and so the discussion for that, and maybe how that reflects Shabir's own experiences of being a gardener in Sharjah and Dubai. So, do you want to try? आखिरी सवाल हम ये करना चाहते हैं कि आपने पहले मेंशन किया कि शबीर में एक शायराना टैलेंट मौजूद था, तो इस शायराना मिजाज का उनके अपने काम से क्या ताल्लुक़ बनता है? ये विक्रम भाई जब तीसरी दफ़ा हमको मिले थे तो इसने मुझे यही कहा था कि ये जो हम लोगों ने मिल के काम किया है इसके बारे में मैं एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ, एक हिस्ट्री लिखना चाहता हूँ, तो मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपका साथ चाहिए। मैंने कहा ठीक है विक्रम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये जो स्टोरी अभी फ़िल्म बनाई है ये भी विक्रम भाई का ख्वाब था कि ऐसी फ़िल्म होनी चाहिए, उसमें ये सब कुछ होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपके सामने है। When we met Vikram Bhai, he told us he wanted to create a history of the work that we had done. And we told him, yes, Vikram Bhai, no problem, we can get that done. And the film that we have just shown you was Vikram Bhai's dream, and we all worked to make it come true. You can find him, but you may add something to that. आप इसमें कुछ और इजाफा करना चाहेंगे? बस विक्रम भाई मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ मिलके काम किया तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सही है, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो बस यही है कि हमारा जो दोनों का प्यार था वही रंग लेके आया, हम एक दूसरे के आज भी सामने बैठे हुए हैं। I'm here today, my family is here as well. All that we have done is a result of the love we had within ourselves and for the crop. And what we have done together is make a dream come true, and I'm very happy for that. So John, question for you. You want to add something on the roundabout, or should I speak a little bit about the film? Maybe I think we're running out of time, so maybe yeah. Okay, I think that was a good place to end on. So thank you so much, Vikram, for joining, and I'm sorry again that you couldn't be here with us in person. But it's fantastic that Shabir is here representing in person for both of you and the other collaborators on the film, and that we're fortunate to be able to screen it for the first time here in Pakistan, your work. Thank you. Thank you so much. Thank you, John. Thank you, Shabir. Okay, Vikram. Okay. Thank you. Okay.